So now you see, we started with some 7-8 blocks, top tasks, and then in that we start drilling down one by one, and then we are actually developing a project plan. What all we are feeling? One is the name of the task, duration of the task, precedence of the task, and resources. That's it. Other than this, everything is created, generated automatically. Then we talk about resource pool. Suppose we already have resources, already there in the system, like you have attendance system or you have LDAP active directory. So you can actually do that. Okay. Now this is like team planning. So earlier what we see, a task onto the list, on the left and the right hand side allocated to a various people. Here we are saying what Dilip is doing. सो इफ आई वांट टू से ये कुछ भी नहीं कर रहा है यार, ये पूरा अगस्त 1 से लेके 7 तक तो इसके पास कुछ काम भी नहीं है, डायरेक्ट शुरू होता है 21 तारीख को, यहाँ पे शुरू होता है क्या. सो नाउ आई कैन एक्चुअली give him some work which is in this particular period. Okay, I can give him some work to Rani on this particular period because she is not doing anything. Okay, so this is a way the things have to be planned and seen. This is like a team planner. So then we are talking about, again, back to Gantt chart view. So this is our standard Gantt chart view. Here we have, we have actually not done something which is, very important, is something which is known as an approval milestone. Okay, let me explain this to you. So suppose, what is milestone? लोग कहेंगे यार तुमने बनाया सब प्रोजेक्ट प्लान वगैरह, और मेरे को कुछ समझता नहीं, आप लोग ही बोल रहे हैं कि प्लानिंग किया हुआ है, हो जाएगा, हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है. हाउ आई नो अबाउट इट? ओके, सो आई डोंट नो, and how I should be able to see that you are going as per the appropriate this one. So suppose I am saying that digital leaflet, okay, होने के बाद में मैं digital leaflet जो है that I will publish. Okay, so I insert task here. That means release of leaflet or publish of leaflet for the workshop. Okay. Now here, if I put it 0 day, okay, then it becomes a milestone. Now this is dependent on activity number 5. Okay. So I'm saying it is on 0 day. What happens is when I say 0 day, now you see here 823, you see something diamond shape here. You see a diamond shape here. This is a milestone. So if I wanted to say that this task you cannot change. Suppose I wanted to do a planning for 26 January का parade. So what is a milestone there? 26 January. उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हम. वो फिक्स रहेगा. जो भी करना उस दिन वो रिलीज होना ही चाहिए. So this is a milestone. So what we will do is we will actually evaluate the milestones only. For example, if I go to milestone here now, so I can declare a milestone from here also. The idea is milestone are, so अगर हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे वर्कशॉप का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो कौन से माइलस्टोन होने चाहिए? एक है कि डिजिटल लीफलेट का माइलस्टोन होना चाहिए. दूसरा है कि सारे रिसोर्स पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, सब फाइनेंस को बता दिया, टीम को बता दिया, तो एक माइलस्टोन फाइनल हो गया. देन एडमिशंस पूरे हो गए, ये एडमिशन क्लोज हो गए, पूरे हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं मालूम, पर क्लोज हो गए, ये माइलस्टोन हो सकता है क्या? लास्ट डेट ऑफ एडमिशन. लैब रेडी हो गए, ये एक माइलस्टोन हो सकता है क्या? Then so we have to actually think like that. Or we have received payments of all, तो ये माइलस्टोन होता है क्या? We have given a payments to all, ये एक माइलस्टोन हो गया है क्या?
Then we have submitted certificates. So we can define these as a milestones, and that is the reason why milestones are important, because you can evaluate the entire project based on milestones per se. All right. So if we actually look at to the menu on the top, it gives you the same things. You can do the change in work time. Okay, I'll just introduce few of the new parameters, because as I said, in this you have to do nothing other than add resources, okay, and allocate the task, allocate the duration, and allocate the predecessor and resources. That's it, nothing more than that. We change in the work time. Like there are countries like European countries where the work timings are changed. So in some period they come at from 8 to 3, and some period they come at 11 to 6 because of the sunrise, sunset, the ice, the cold temperatures. You can actually have everything like this. So you can have exception day, non-working day, editing working hours कि उस दिन बॉम्बे में क्या बोलते हैं यात्रा जाने वाली है, प्रोसेशन है, सो गणेशोत्सव है, तो उस दिन आधा दिन होगा. So you can plan everything into this. You once you feed it here, the life is done. You don't have to really worry. It will calculate everything accordingly. Okay. Yes, standard project calendar. If you have your own 24 hours night shift, individual calendars also, okay, like I don't work for more than 10 hours, because that's my rule. So you can plan my calendar accordingly, so that अगर मैं और भी कोई प्रोजेक्ट्स में हूं तो वो यहाँ के साथ कंफ्लिक्ट नहीं करेगा. सो आई से ये प्रोजेक्ट के लिए मैं दिन में 6 बजे से लेके 10 बजे तक अवेलेबल हूँ. So I can create my calendar accordingly and put it here. It will match it every time and ensure that they are not overlapping. Okay. So this is like change in the time kind of a thing. Then we have something which is like project information. So you can write here whatever you wanted to say. We wanted to organize the workshop for 40 people and this is a targeted time. Start date, you write start date, you write current date. Okay. So current date और start date अलग क्यों है? Because मैं जब planning कर रहा हूँ तो start date current date होगा, ये जरूरी नहीं, इनफैक्ट नहीं होगा. नहीं तो प्लानिंग आज का प्लानिंग मैं आज सुबह करके कैसे चलेगा. सो आई मस्ट बी प्लानिंग फ्रॉम 15th of August ऑनवर्ड्स. तो वो करंट डेट मेरा आज का है, सपोज 6 अगस्त है, लेकिन स्टार्ट डेट जो है वो 15 अगस्त हो सकता है. नहीं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. जैसे अभी मेरा प्रोजेक्ट वर्कशॉप रेडी हो गया था, मैं प्रिंसिपल सेज दैट नहीं 15 अगस्त को नहीं करने का, रिस्पॉन्स नहीं आएगा 1 सितंबर को करने का, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट प्लान चेंज करना पड़ेगा ना. बट करने की जरूरत नहीं, जस्ट गो एंड चेंज द डेट हियर, स्टार्ट डेट, एवरीथिंग विल गेट ऑटोमेटिकली चेंज. Okay. Then you can also have a priority, like I have to put something. Suppose Dilip Tikle gets multiple projects at the same time from a same university, तो प्रायोरिटी किसको देना है? तो ये प्रायोरिटी जिस अब आपका 500 है और किसी का और थोड़ा ज्यादा है, 1000 है, तो मैं 1000 को पहले दे दूंगा, 500 को बाद में दे दूंगा. ओके. शेड्यूल फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, तो ये आपने अगर स्टार्ट डेट चेंज किया तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा. सो राइट नाउ आल्सो यू कैन चेंज इट. अगर आपको इसको 15 अगस्त करना है समझो स्टार्ट डेट, तो आपने किया है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ओके बोल दिया मैंने, तो ये सारे जो ये सब चीजें हैं जो हम लोगों ने तय की थी. ओके. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे 23 अगस्त हो गए, 15 अगस्त से यहाँ से शुरू हो जाता है. जो पहला वाला नॉन प्रेसिडेंसी वर्क होता है उसको चेक करना पड़ेगा आपको. So the point which I am trying to tell you that we have, that's something which is important. This is WBS, define code. Okay. इसका मतलब अगर मैं कोई लेवल पे वही WBS बार बार मुझे करना है तो उसको मैं कोड देके कर सकता हूँ. कस्टम फील्ड्स आपको ऐड कर सकते हैं आप. प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन आपने देखा. Suppose you want to see a resource sheet, so you see resource sheet. You start to see the resource utilization, you can see that. If you want to see other resource form, तो ये रिसोर्स का मतलब अटेंडेंस का शीट अगर बनाना है, उसका डॉलर का शीट बनाना है, स्टैंडर्ड रेट क्या है, यूजर्स कितना रेट है, सब कुछ ये. सो इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ आपको फ्री मिल जाता है. ये दिलीप का जो वर्कलोड है वो आपको देखने को मिलेगा कि कौन से दिन पे 8 घंटा काम है, कौन से दिन पे 4 घंटा है, कौन से दिन पे काम नहीं है.
ओवरलोडेड है तो फिर रेड आ जाएगा, नहीं ओवरलोडेड है तो ग्रीन आ जाएगा. So that's a kind of and you can always move to Gantt chart where you can. Then you have here you have so many views actually.